एंड वेलकम बैक अगेन, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ आज काफ़ी लोग बैठ के ईमेल कर रहे होंगे कि लुबना व्हाई शी पिकिंग ऑन अस। नो, आई रियली एम नॉट पिकिंग ऑन एनी ऑफ यू. The thing is, this is something to talk about, you know, why we become so defensive, not just in Pakistan, I think even just overall. और compliment तो एक और topic है, किसी और दिन करेंगे कि हम तारीफ क्यों नहीं ले सकते हैं. But a little bit I want to talk about this event आप लोग जो कर रहे हैं. I'll ask you, आप बताइए कि वहाँ पे क्रिकेट तो है, और अब मैं ये नहीं चाहूँगी कि अभी तक खातून क्यों नहीं आई क्रिकेट, दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे. बट क्रिकेट तो होगा वहाँ पे. लेडीज़ के लिए वहाँ पे क्या है कि खातून जब जाएं वहाँ पे कि क्रिकेट बैठ के देखेंगी, या उनको आप लोग बिजी कर देंगे किसी और जगह? देखिए, ये जो इवेंट हमने स्पेशली आफ्टर 2012 जी, जब ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ रहमतुल्लाह जो ये किया, ये अब क्रिकेट इवेंट नहीं रहा, अब ये क्रिकेट मेला है. क्रिकेट मेला है जिसमें एक पिकनिक का सा समा होता है. लोग जो हैं, बच्चों के लिए हमने बहुत सारे इवेंट रखे हुए हैं. उनके लिए स्लाइड्स होंगी वहाँ पे, उनके लिए मून वॉक है, उनके लिए हमने छोटी छोटी रेसेस जो दरमियान में गैप होता है उसके अंदर कुछ इवेंट्स करवाएंगे. बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बच्चे बहुत बोर होते हैं. जी हाँ, जी जी, ताकि उनको थोड़ा सा दिलचस्पी रहे इस गेम के अंदर. इसके अलावा हमारे स्टॉल लगा रहे हैं हम वहाँ पे, जिसमें लेडीज़ के लिए कपड़े होंगे. और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये कि वहाँ आपको रैफल ड्राइंग होगी, और ये उससे बहुत सारे कीमती इनामात, जस्ट इनामात नहीं, कीमती इनामात आप, मतलब अगर आप रैफल में जाएंगे तो किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं आप में? हर चीज़, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी मेंशन की हैं, ये सब फ्री हैं. अच्छा, ठीक है. इसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. इवन आपका लंच जो है वो भी इनके कोलैबोरेशन से जो है वो पिछले साल 3-4 सालों से हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो और बहुत अच्छा लंच प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, और लोकेशन का मैंने आपसे बात करनी थी कि आई बिलीव पहले ये कहीं और होता था, अब आप लोगों ने एक स्टेडियम. जी, ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि पहले जो है हम वो एक कम्युनिटी पार्क में जी, वहीं पे हम खेला करते थे क्रिकेट. विकेट भी जो है वो आर्टिफिशियल होती थी. लेकिन इस दफ़ा जहाँ पे इवेंट हो रहा है वो है मूसा स्टेडियम. मूसा स्टेडियम की ख़ास बात यह है कि ये एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है. तो ये स्टेडियम जैसे क्रिकेट स्टेडियम, मतलब सीट्स होंगी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोग कह रहे होंगे कि लुबना बता रही हैं, सो आई वांट टू मेक श्योर. मैं आपको थोड़ा सा उसकी ग्राउंड के बारे में बता दूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर हम पार्क्स के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर हमने रेंट की हुई थी जगह, वहाँ खेलते थे. फिर हमने ये जो मूसा स्टेडियम है, इसमें बाकायदा पूरी ICC की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये स्टेडियम बनाया गया. जी जी, ओके. आपके पास टर्फ विकेट है जो कि ओरिजिनल विकेट है, जिस पे सही गेम्स होते हैं. पूरा स्टेडियम जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मकसद ये है कि वहाँ पर आपको साइड स्क्रीन्स, स्कोर बोर्ड, बैठने के लिए इंक्लोजर्स, और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम में होनी चाहिए. That's a very big thing, mashallah. So Saqib Bhai is now the president of the Houston Cricket League. What he has done is staggering. I mean, honestly, it is unbelievable. He, just out of an interest in cricket, bought land, got it leveled, hired a West Indian curator who's living there full time. He now has a second guy full time coming in from Florida to help out. He has created a ground which is an international level ground. He hopes to one day see international cricket in Houston. So that's basically his idea behind it. And now this Musa Cricket Stadium, and again, I'm not very familiar with cricket. Is this the first, I believe this is the first stadium which is really for cricket, right? I think पूरे अमेरिका में I think ये पहला है. There is one in Florida which is an exceptional stadium. The city paid for that. There was a $6 million investment from the city. So that is the one international level ground in the US. This is going to be the second one. And I think New Jersey may be it, right? Not really, no. But this is going to be, this is the first privately funded one. Okay, privately funded, right. Done entirely by one person. It's a remarkable achievement. That's a very big thing. देखें क्रिकेट, मैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, LA वगैरह में सब जगह क्रिकेट खेल चुका हूँ. लेकिन जैसा स्टेडियम, जैसी फैसिलिटी ये स्मार्ट चॉइस ने मूसा स्टेडियम में बनाई है,
ऐसी फैसिलिटी आपको यूएसए में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एक फ्लोरिडा में है, लेकिन इट्स अ स्टेट फंडेड। It's a state fund. This is a privately funded. So it's even a bigger thing. And this is still a work in progress because he has this ground. He's bought land around it. He plans on making 3 more grounds around it. It's going to be an amazing facility. It's a wonderful feeling just to hear that. So one thing I want to say is TV1 is going to be there to cover it. I'm sure you all know that. तो आप लोगों को बता दूं, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग जाएं वहाँ पे और फिर TV1 पे ज़रूर जब आप वहाँ पे कैमरा चलो ज़रूर बताइए वहाँ पे जो हमने देखा था. And the thing is, you know, to go to these things, I think most importantly, I think cricket is something our elders, I think the next generation, they need to see these things. आप जैसे मुझे बता रहे हैं, I mean, for me, मुझे स्कीटर स्टेडियम ज़्यादा पता है, या न्यूयॉर्क में था, Yankee Stadium. I mean, those things I remember more. But the thing is, if it's here in Houston, and I think it's in Pearland. मैं एड्रेस दे दूँ यहाँ का because I believe it's new. It's 5515 McKeever Road, County Road 100, Pearland, Texas. Zip code is 77584. And of course, I'm sure you can call them. आप इनको call भी कर सकते हैं. You can call us, you can email us. There's a Facebook page for the Aziz Rahmatullah They're all ready Memorial for this Cup. thing. But the truth of the matter is, I know we spoke about cricket, but this is a cultural event. And it's not for, the purpose of the show was to tell our people, because right now, not only people in Houston are watching this show, पूरा अमेरिका देख रहा है, पूरा कनाडा देख रहा है, तो उन लोगों को भी हो कि ये चीज़ किसी ने सोचा, I mean, ज़मीन लेके उसको set up करना, there's a lot of money involved in it. लेकिन वो कहते हैं, you have a dream and you make it come true. और आपका जैसे आप organize कर रहे हैं, फिर आप जैसे लोग जो sponsor कर रहे हैं, I think it makes it even bigger and better. और जब community जाएगी इन events के ऊपर, और of course TV channels हो कोई भी हो, I know TV1 is going to be there, then it gives you even more, कहते हैं अगले साल और इससे अच्छा करें, make it bigger and better, inshallah. And of course, the support, it's a very big thing. So, I mean, if I might say, look, I'm mostly from Chicago. Right. Houston is ahead of the curve in a lot of ways at the moment. It's going to turn into potentially the home of cricket in the US because of what Saqib Bhai has done. We have a tournament here that is supported remarkably well, and we have things like your show. Okay, your show is ahead of the curve. I mean, there are not many, or at least, I mean, you might know better than me, there are not many South Asian shows originating from a city which are being showed countrywide. We're getting support from the community who show up to watch. We have people like Saqib Bhai who are doing an amazing job in the cricketing end of it. The family obviously is providing, you know, the finances and that aspect, but we're getting support from the media. We're getting the ability to come here on a show nationwide for an hour. I mean, I can't thank you enough for that. You've done a great service to us, to the community, and to the game. Well, thank you so much. No, I'm happy. I mean, I'm just excited, and I'm hoping to come there also too, inshallah. But no, that's not acceptable. Hoping is not good enough. We want you. We want the family. We want everyone you know, anyone you know who would like to be introduced to the culture, to the game. Show up. Well, why don't you give this message to our viewers? Tell them you need to show up and be here. Absolutely. I mean, anybody out there in Houston, anybody from Dallas who wants to drive up, anyone from Austin who's interested in watching a good cricket game and having a Mela picnic, show up. We're here. Okay, definitely, and it's my pleasure to have you on the show. And again, the community needs to know about people like you all, because I know it's a lot of work. और आपसे मैंने कहना था, आपका जो मैं ये देख रही हूँ इस वक्त free entry, free food, free parking, picnic भी है, raffle prizes भी है, attractions भी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, and I think that's it's very nice कि आपने बच्चों के लिए भी वहाँ पे एक चीज़ रखी है, क्योंकि I know many times kids get bored, या जो बड़े हैं वो सोचते नहीं कि बच्चे आ रहे हैं बैठ के वहाँ पे अपना iPad पकड़ के and they're just sitting away. But I think to get the kids involved, ताकि बच्चे ये चीज़ कह सकें, you know what, mom, dad, next year let's go there again. That's what you need, and you want people participating, how they can be a part of it, and even make I mean, I'm just going off now with this, but even make a junior league of cricket for children. Because so there is actually one that has begun. When I say Houston's ahead of the curve, there is a junior curve. There are 2 or 3 teams. There are 2 or 3 clubs in Houston that have formed junior. They're coaching kids. Siddesh Patare, Sushil Nadkarni. They have 80 kids that they're coaching every weekend for free. Wow. Spending their own volunteer time to introduce cricket to the next generation. Again, this is part of our culture. It's part of our DNA. None of us want to lose it. Exactly. Without getting kids into the sport, we're going nowhere, right? To grow the sport in this country, you have to have kids, not just Indian and Pakistani kids. You need kids from all over. I mean, soccer was a minority sport 30 years ago. Soccer today is a mainstream sport. There's no reason that can't happen with something like cricket, right? So
all of it kind of ties together. Houston's doing an amazing job with junior leagues, with junior coaching. Hopefully kids come to an event like this, they see what it can be at the next level, they see how much fun it is. There are plans in the future. I mean, we'd like to get more into the youth aspect of things, even as a tournament and as a family. We'd like there to be a youth game in this kind of thing next year. We'd like to have a youth coaching camp for free. We have plans to kind of have further youth involvement as we go along. Okay, that's one of the goals. I think TV1 is with you on this one. I mean, definitely, I think it sounds wonderful. It'd be great if you guys were. And I'm sure you guys can do it. And आपसे मैंने कहना था कि I know I was bothering you a lot to kind of plan out this show, but I think this idea, this thing that you all have, the seed has been, you've planted the seed, and now I think it's going to blossom out to be an amazing thing where I think अगले बच्चे बड़े और मेरे ख्याल में इस इवेंट के ऊपर आई थिंक जो बड़े बुजुर्ग हैं आई थिंक वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे जब वो देखेंगे एंड आई नो आपने बताया कि कुछ डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो यू कैन गेट मीट एंड ग्रीट और दे विल बी प्लेइंग द गेम आई वांट टू आस्क नहीं ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर खेलेंगे भी और यही आइडिया ये है कि हमारे ह्यूस्टन के जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो खेल सकें मिंगल हो सकें तो ये एक टाइम होता है जहाँ पर वो उनके साथ खेलते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनसे लर्न करते हैं कि कैसे खेला जाता है तो आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल इवेंट डेफिनेटली एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग आउट टू द शो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम राइट नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आउट एंड आपको भी थैंक यू कहना था कि आप भी आए थैंक यू वेरी मच And of course, आपको बता दिया once again, this is happening October 11th, next Sunday, at the Musa Cricket Stadium. For more information, you can definitely check them out. And again, be a part of it, not just to support this event. I think any cultural event, हम shows पे जाते हैं, कोई star आता है, मिलने जाना है. लेकिन this is something where you want to kind of teach your children about, even those elders in the family, take them over there. अगर वो कहते भी अरे बेटा कहाँ जाएंगे हम बस कहें चले आपको बिठा देंगे हम लोग कहीं साइड पे बट एनीवे दैट्स अ लिटिल बिट आई वांट टू शेयर विद यू ऑफ कोर्स टाइम आ गया मुझे शो रैप अप करने का I do want to thank Cass Inspirations for providing us this beautiful set. You can contact her, Aisha Khan, if you are planning an event. She can help you plan it, and she's a designer too. And second, I would like to thank Roop Sari Palace, who are located in Houston, for providing me this beautiful outfit. अगर आपने भी कपड़े ख़रीदने हैं खूबसूरत से ज़रूर जाइए रूप साड़ी पैलेस पे एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. आज मैं छोटा सा टिप दे दूँ आप लोगों के कि छोटी सी मैंने सोचा ज़रा सी टिप्स दे दिया करूँगी कि रिस्पेक्ट के बारे में कि रिस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ अर्नड. आप कभी डिमांड मत करें रिस्पेक्ट किसी से. आप अगले को रिस्पेक्ट देंगे अगला आपको भी रिस्पेक्ट देगा. याद करिएगा इस चीज़ को आप लोग. एनीवे इंशाल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.